consumer's equilibrium in case of two commodities. The law of DMU applies in case of either one commodity, two commodity. However, in real life, करें हमने one commodity तो कर दिया, law of DMU, but क्या लाइफ में एक ही commodity कंज्यूम करते होंगे? सर करते तो दो भी नहीं होंगे, करते तो अनलिमिटेड, बहुत सारे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट स्टिल one commodity, two commodity. However, in real life, consumer consumes more than one commodity. In such a situation, law of equimarginal utility applies. It helps in allocation of income. One commodity केस में जो हमने लॉ पढ़ा था उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू. यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ स्टडी नहीं कर रहे, बस नाम बता रहे हैं. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, MUX upon PX is equal to MUY upon PY is the law of इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. कह रहे जब ये इक्वल होगा ना तो इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे टू कमोडिटी केस में. 3 अगर कमोडिटीज हैं तो MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUZ upon PZ. क्लियर? 4 है तो MU1, MU2, MU3, MU4, P1, P2, P जितने मर्जी हो सकते हैं, हमारे कोर्स में 2 तक ही. ठीक है, बट मैं कह रहा हूं मोर देन 1 है तो कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, गॉसेंस सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ क्या था? वन कमोडिटी. लॉ ऑफ डीएमयू, law of DMU was the first law of consumption. Second law is law of equimarginal utility. As law of equimarginal utility is based on law of DMU, all assumptions वो अभी यहाँ पे भी applicable हैं. ठीक है जी. According to the law of equimarginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when the ratio of MU of two commodities and their respective prices, ratio of MU and their respective prices, so MUX upon PX is equal to MUY upon PY when the ratios are equal. And second condition is MU falls as the consumption increases. The law of DMU must apply. तभी तो आप इतने श्योर हो कि MUX upon PX is greater than MUY upon PY. पी लो एक और पानी, थोड़ा सा MUX गिर जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे. How can you be so sure? Because of law of DMU. तो कंडीशन फर्स्ट बता ही चुका हूं. The ratio of MU to price is the same in case of both the goods. That is MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM. Do I need to explain this? कि what is MUX upon PX? That is the satisfaction per rupee derived from good X. MUY upon PY, that is the satisfaction derived per rupee from good Y. As marginal utility of money is assumed to be constant, the above condition can also be written as constant है, and if nothing is specified, it is assumed to be 1. तो 1 ही हो गया ना. तो हम किस पे फोकस करते हैं? MUX upon PX should be equal to MUY upon PY. बट एक्चुअली जो पूरा कंडीशन है उसमें MUM भी आता है, बट उसने रीजन दिया ना कि जब हम न्यूमेरिकली कर रहे होंगे तो MUX upon PX equal to MUY upon PY में ही कर रहे होंगे. MU is assumed to be constant, and if nothing is specified, it is assumed to be 1. Most important part ही क्या होता है? Disequilibrium. What happens when they are not equal? ध्यान से सुनेंगे please. What happens when they are not equal? Suppose MUX upon PX is greater than MUY upon PY. इसका मतलब क्या होता है? MUX upon PX is greater than MUY upon PY. इसका मतलब क्या है? उसमें किसमें satisfaction per rupee derived from good X is more than the satisfaction per rupee derived from good Y. So yes, good X is giving you more satisfaction as compared to the money spent on good Y. तो क्या कंज्यूम करना चाहेंगे मिस्टर पुअर? X या Y? If MUX upon PX is greater तो फिर X. तो ध्यान से देखेंगे. Suppose MUX upon PX is greater than MUY upon PY. The consumer is getting more marginal utility, more satisfaction, additional satisfaction in case of good X as compared to Y. Therefore, he will buy more of good X and less of good Y.
This will lead as you consume more of good X, MUX बढ़ेगा या गिरेगा? As you consume more of good X. सॉरी सर, वो थोड़ा हो गई थी. लॉ ऑफ DMU, MUX गिरेगा, तो गिरेगा तो फिर MUX अपॉन PX की वैल्यू भी गिरेगी. तो अभी वो ज्यादा थी, तो वो तब तक हम कंज्यूम करते रहेंगे जब तक वो इक्वल ना हो जाए. The consumer will continue to buy more of X till the time MUX upon PX becomes equal to MUY upon PY. ठीक है, वो कम है तो आपको Y ज्यादा satisfaction मिल रही है. The consumer is getting more marginal utility per rupee from good Y. The consumer will buy more of good Y and less of good X. आप X की कंजम्पशन कम करेंगे तो MUX upon PX बढ़ेगा, Y की कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो MUY upon PY कम होगा. कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो MUY गिरेगा ना. तो कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? जब तक MUX upon PX becomes equal to MUY upon PY. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट होता है, आपको लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आंसर का भी पार्ट होता है. सेकंड कंडीशन सिंपल है, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए. MU falls as consumption increases. The second condition needed to attain consumer's equilibrium is that MU of a commodity must fall as more is consumed. If MU does not fall, so how can you be sure कि और पानी पी लो या और आइसक्रीम खा लो? तो नहीं अटेन कर पाएंगे इक्विलिब्रियम. If MU does not fall as consumption increases, the consumer will end up buying only one good, which is an unrealistic condition, unrealistic situation. एक ही commodity थोड़ी ना consume करोगे. Consumer will never attain equilibrium. Finally, it can be concluded that a consumer in consumption of two commodities will be at equilibrium when he spends his, ध्यान से देखेंगे, ये आपको definition है, define consumer's equilibrium in case of two commodity. तो two commodity में ये definition आएगी. A consumer in consumption of two commodities will be at equilibrium when he spends his limited income in such a way that the ratios of the marginal utilities of two commodities and their respective prices, the ratio of marginal utilities of the two commodities and their respective prices. तो ratio तो marginal utility और price का है ना, और दो ratios compare हो रहे हैं when they are equal and MU fall as consumption increases. So leave it out. Very, very important to commodity case.